Uh, are we finished with the quiz? हाँ जी, क्विज खत्म हो गया। हेलो, शायद साहब आवाज आ रही है? डॉक्टर शाहिद, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। ऑलराइट, ठीक है। क्विज कंप्लीट हो गया है या अभी चल रहा है? 1 मिनट रह गया। ऑलराइट। मैं जरा दूर था, ये आवाज आई है आपकी, ये आवाज आई थी आपकी, मैं जरा दूर था, आ गया हूँ लैपटॉप के पास। चलो ठीक है, सही है। Okay, guys, please let me know when the quiz is over so that we can start. सर हो गया खत्म को। आप आपको एक्सटेंड कर सकते हैं, अब सबमिशन अलाउ नहीं कर रहा। क्विज को नहीं सर, सबमिशन टैब को। क्विज की सबमिशन को या लैब की सबमिशन? सर क्विज की। क्विज का टाइम ओवर हो गया तो वो सबमिशन कैसे करेगा? अब एक्सटेंड मेरे नहीं पता कि कैसे कर सकते हैं। देखता हूँ, या मारिया मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही। मारिया, आर यू देर? आप उसकी पीडीएफ जमा करवा दें, फिर मारिया को ईमेल कर दें। ठीक है सर, कर दिया। हाँ जी, इससे और तो कुछ नहीं हो सकता अब। ओके, so let's start today's lecture. Let's hope this lecture will play an important part in your projects, because today we are going to talk about counters.
Counters are everywhere, and digital world would not be working without counters. You see counters uh, in traffic lights, you see counters in your watch, you see counters in many applications you have in counters. Counters are used to measure time. They are used to work in a stopwatch, and counters are used to count certain number of events, like event counter. So counters have so many applications. Mm, in olden days, when there were no integrated circuit counters, you had factories where there were mechanical counters. So they were very expensive, very expensive. Maybe a couple of 100,000 rupees for one counter, because that counter need to be mechanical counter. So for example, if they wanted to mix a gas, rinse a gas chamber with pure air for half an hour, they would set a mechanical counter to exactly half an hour. When the mechanical counter will run out, then they will s- add some other gas in the chamber. So many applications like that in the industry, and they were all manual. So after half an hour, when they wanted to mix another gas in the chamber, they would set the timer for, say, nitrogen, pure nitrogen needs to be sent. So they would say set a counter for 1 hour to fill the chamber gas uh, chamber with nitrogen. So anyway, so there were many applications of the counters. So what are counters? The fundamental difference between a counter and a state machine is the counters don't have any input. They just go on from state to state, state to state, state to state. They don't have any input. So when you give them a clock, they start going from one state to another. The only thing you can do is to reset them. So they go back to 0 0, and then we'll start from that again. So they are simpler than sequence detection circuits, where you have quite a complex combination circuit at the input. Counters, however, didn't need any input, and so they would simply go from state to state. So, for example, वो chat window भी on कर देते हैं. Okay, so basically, you have a counter. Let's say it would simply go from one state to another. This is a reset state, and it will go to next state, next state, next state, without any input. So this is just a clock pulse. Remember, the arrow represents a clock pulse in the state diagram. So it will go from state to state, and it will probably will come back here to reset state once it overflows. So it may have an output, uh, so that when it goes from the final stage to reset state, it may give an output is shown like this. That it may give an output which is called carry out. That represents the counter has completed its full circle, and now it is going back to 0 0 0. So this carry out will help as if you want to cascade, use this as a clock to some other circuit, so that the other circuit can then keep on counting.
from that point. So this is these counters have very important applications. For example, a binary 3-bit counter, a binary 3-bit counter. Uh, Counter will go from 000, yeah, 4-bit counters. That's it. 4-bit counter from 000, 0001, 0010, 0011, and so on. And it will reach 1110, and then it will reach uh, the final stage 111. Then it will overflow. From 111 to 00, it will overflow. So that will say that it has completed 16 counts, and now it is going back to 00. A BCD counter is usually used for human beings. BCD counter, 4-bit counter. What would be the difference between binary counter and a BCD counter? A BCD counter will not go up to 1111. It will basically go up to 1001, which is 9, and then it will go back to reset state. So most counters that are used for displays are BCD counters. So they go from 1001 to 00. So this is called up counter because it is counting up count. Sometimes some counters may have only just one input. Occasionally, they may have one input, and that input is used for up and down count. Up and down counter. So basically, that is you can say X input or U/D input. When that input is 1, U/D input is 1, it will count like this. But anytime if you make this 0, it will start counting in the reverse direction. So it will start counting in this direction. So this is called a down counter. So basically, up counter case, if your current state is 0000, your next state will be 001. T state and T+1 state. So this is a four flip-flops, and it will go like this: 0001. The next state will be 0010. But in down mode, so it will reach from 0010, 0011, and go on that. When it will reach 1101, it will reach 1110, and from 1110, it will go to 1111, and from 1111, it will go to 0000. Then in this transition, it will send a pulse at the output. So that output is used to clock some other circuits. However, in the down count mode, it is opposite direction. From 001, down count. This is up count, and this is down count. T+1. From 001 state, it will go to 00 state.
one less. And from 0, 0 state, where will it go? From 0, 0 state, where will it go? Anyone? Hanji, Anushe? From 0, 0 state, where will it go? टाइप कर दें, अगर आप चैट में लिख सकते हैं. Hassan Zubair, very good. Hassan Shabbi, 1111. So everyone agrees? Because Zahar, then it underflows, and it underflows, and then from 0, 0, 0, 0, it will go to 1, 1, 1, 1, which is from here, it reaches here from 0, 0, 0, then it goes here to 1, 1, 1, 1. So at this time, it gives an output. This is called borrow out. Borrow out. Carry out keh le, ya borrow out keh le. Borrow out is usually when it underflows and it goes from 0, 0, 0 to 1, 1, 1, 1. You get a borrow out. When it goes from 1, 1, 1, 1 to 0, 0, you get a carry out. So how do you design the circuit? There are two ways to design the circuit. One is like an adder, which is ripple carry adder. Same way we can have a ripple carry counter. In a ripple carry counter, what you do is, let's say if I have this D flip-flop, I give a clock here and I connect this output to this, which is Q bar, Q. So let's see what is the behavior of this after reset. We saw that already in some other lecture. This is reset. So the best way to show this is through waveform. Because when you reset, this output will be 0, this output will be 1. And on a clock pulse, this 1 will be transferred to here, and this will become 0, 1, this will become 0. So basically, if you will see that in any counter, any binary count जब आप करते हैं 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0. So this is basically counting 0 1 0 1 0 1 0 1. Whether it's up down mode or whether it's a down count mode, this is always doing 0 1 0 1 0 1 0 1. So so if we plot this on the waveform, this is the clock, here is this clock. So we can take this is positive edge trigger flip flop, so we can take this down. So initially we don't know what the we have a clear is our reset is like this. So here we reset this circuit. Reset is high active. So we reset the circuit at this time. So we now know after reset, this D flip flop will be in the known state. So after reset, the Q0, this Q will be in the known state, so it will become 0. Before that, we didn't know okay, what was the Q. After this, clear Q becomes 0.
So we are here. Q is 0. Now when this Q is 0, Q dash is 1. When the clock pulse comes, Q will become 1. And the next clock cycle, Q is 1, this is 0. So this 0 comes here, and this will be transferred to the next clock cycle, so it will become like this. So next clock cycle, so it is going to go like this. Now, I can use this to clock another circuit. Let's see if I use this over here and to clock another flip-flop. Then what will happen? Clock another flip-flop like this. This can be called then Q0, Q0 complement, Q0, Q1, and this is Q1 complement. This is the flip-flop 2. Now, since this is also cleared, at the same time, all of them are cleared. So this is also Q1 will also be cleared here. So, oh sorry, I think I made a mistake here. I should also connect this over here. वरना वो up counter बन जाता है. So I connect this over here. I just explain what will happen if I don't do that. So this point is going back to this. So basically, when is this going to clock? On the positive edge of this. So Q naught का positive edge है ये वाला Q naught का positive edge. So Q naught का पॉजिटिव एज ये है और Q naught डैश का पॉजिटिव एज ये वाला. अगर मैं Q naught ये भी चीज है तो Q naught डैश क्या होगा वो चीज ये चीज होगी. दिस इज Q naught डैश. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि when this is 1 this is 0, अगले क्लॉक साइकिल में ये इधर ट्रांसफर हो जाता है, ये 1 हो जाता है. अगले क्लॉक साइकिल में ये इधर ट्रांसफर होता है, ये 0 हो जाता है. अगले क्लॉक साइकिल में ये इधर ट्रांसफर हो जाता है, ये 1 हो जाता है. सर क्लियर के बाद दोनों जीरो नहीं होंगे. सॉरी क्यू नॉट और क्यू नॉट का कॉम्प्लीमेंट दोनों जीरो रीसेट पे. क्यू नॉट 0 होगा, क्यू नॉट डैश तो 1 ही होगा ना यार. तो लेकिन क्लियर में ये नहीं होता कि सारे आउटपुट जीरो हो जाते हैं. क्यू से सारी आउटपुट 0 हो जाती हैं, क्यू नॉट क्यों 0 हो जाएंगी भला. ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है डी फ्लिप फ्लॉप की कि व्हेन क्यू इज 0 Q1 इज कंप्लीमेंट ऑफ Q0. वो भी 0 हो जाएगी, वो तो इलीगल स्टेट में चला जाएगा. कोई भी फ्लिप फ्लॉप की क्यू और क्यू नॉट क्यू डैश और क्यू नॉट क्यू डैश और क्यू जो है दोनों 1 या 0 इकट्ठी नहीं हो सकती. सही है सर. दैट विल सेंड द फ्लिप फ्लॉप इनटू इलीगल स्टेट.
So when we say clear, that means only queues will be cleared. When we reset this flip flop, only queues are cleared. आपने शायद पिछले लेक्चर देखे नहीं है. तो when we do reset or clear, only queues are cleared. और क्यू डैश क्लियर नहीं हम कभी भी करेंगे. ये वाला काम हमने कभी नहीं करना कि दोनों को ही क्लियर कर दें. ये कभी हो ही नहीं, पॉसिबिलिटी रहती नहीं है डी फ्लिप फ्लॉप में कि ये दोनों एक ही स्टेट में चाहें. अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये 0 होगा. Now coming back to Q1, so Q1 will operate on this clock edge of Q1 dash, Q naught dash. So this is the clock edge of Q1 naught dash. So यहाँ पे जब आएगा, so this will become 1. अगले clock पे this will come 0. अगले पे ये 1 हो जाएगा, अगले पे ये 0. So इसका ये this is Q1. Q1 dash क्या होगा, वो इसका भी कंप्लीमेंट होगा. They are always complement of each other. अब जब मैं Q1 dash दूंगा तीसरे फ्लिप फ्लॉप को मैं दे देता हूँ Q1 dash एज ए क्लॉक. तो जाहिर है कि ये अब Q2 जो है वो इसके क्लॉक एज पे Q1 dash के क्लॉक एज पे ऑपरेट करेगा, क्योंकि मैंने Q1 dash इधर लगाया हुआ है. तो Q2 क्या हो जाएगा, Q2 विल बी ऑन द एज ऑफ दिस. थोड़े और बना लेता हूँ. अब आपने क्या करना है, आपने क्यूज को फॉलो करना है. रीसेट के बाद सिर्फ क्यूज को फॉलो करना है. और उसके लिए आपको जो है ना, क्यूज को फॉलो करने के लिए आपको अपनी गर्दन जो है ना वो ऐसे करनी पड़ेगी, ऐसे. तो जब ऐसे करेंगे ना तो आपको ये देखे Q2 भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है. क्लॉक साइकिल नंबर 1 के बाद क्या हुआ, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 हो गया. क्लॉक साइकिल नंबर 2 के बाद क्या हुआ, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 हो गया. क्लॉक साइकिल नंबर 3 पे क्या हुआ, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है. क्लॉक साइकिल नंबर 4 पे क्या हुआ, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है. क्लॉक साइकिल नंबर 5 पे क्या हुआ, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है. क्लॉक साइकिल नंबर 6 पे क्या हुआ, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है. So as you can see now they all become 1 1 1. क्लॉक साइकिल नंबर 7 पे. क्लॉक साइकिल नंबर 8 पे क्या होगा फिर, they all will come back to 0 0 0. And there where you will get carry out for a 3-bit adder. So basically this is an up counter. So very interesting up counter. वो मेरी गर्दन में दर्द निकला ये यार, ऐसे कर करके. तो समझ आ रही है ना, इतनी मैंने अपनी मेहनत की है गर्दन के साथ.
तो मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि किस तरह से ये काउंट कर रहा है। तो इसमें अगर आप इसको देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इससे आधी है, तो समटाइम दिस इज कॉल्ड डिवाइड बाय 2। अगर इसको देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी इससे भी आधी है, क्योंकि दो दफा जीरो, दो दफा वन रहता है, फिर दो दफा जीरो रहता है, दो, सो इट इज डिवाइड बाय 2 ऑफ दिस एंड इट इज डिवाइड बाय 4 ऑफ दिस। ये 0 0 0 0, फिर चार दफा वन, सो इट डिवाइड बाय 2 ऑफ दिस एंड डिवाइड बाय 8 ऑफ दिस। ये 8 क्लॉक साइकिल के बाद ये इसमें एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है। ये जीरो चार क्लॉक साइकिल के जीरो है, फिर चार क्लॉक साइकिल के लिए वन है, फिर चार क्लॉक साइकिल के लिए जीरो होगा, सो इट इज डिवाइड बाय 8। तो in this case, since every D flip-flop is giving a clock to the next D flip-flop, that is giving a clock to the next flip-flop. So basically, अगर आप इसको फुल एडर की तरह देखें तो इस फुल एडर का कैरी इसको क्लॉक कर रहा है, इस फुल एडर का कैरी इसको क्लॉक कर रहा है, इस फुल एडर का कैरी इसको क्लॉक कर रहा है, तो ये भी एक तरह से एक दूसरे को सीरीज में क्लॉक कर रहे हैं। याद है ऐसा फुल एडर जो जिसमें एक का कैरी दूसरे को जाता है, दूसरे को, उसको हम क्या कहते थे? एनीवन? जो हमने फुल एडर्स पढ़े थे उनको क्या हम कहते हैं? कौन से टाइप का एडर था वो? दो तरह के पढ़े थे। हाँ, रिपल कैरी एडर। वेरी गुड। हसन शबीर, छा गए आप? और कोई नहीं आंसर दे रहा, क्या है? बाकी लोग किधर है भाई? हसन शबीर के लिए ढेर सारी तालियां बजाएं। हाँ जी, वेरी गुड। सो इसको फिर इसलिए इसको भी रिपल कैरी एडर तो नहीं कह सकते, इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है रिपल काउंटर। तो ये एसिंक्रोनस काउंटर है थोड़ा सा, इन अ वे कि ये क्लॉक इसको चलाती है, ये इसको चलाती है, सो ऑल ऑफ देम आर बेसिकली रिपलिंग ईच अदर। तो अगर 16 बिट का होगा आपका काउंटर, तो आप देख सकते हैं कि आखिरी काउंटर कब उसकी बारी आएगी। तो सारों की आउटपुट क्लॉक जाएगी, दूसरे को जाएगी, दूसरे को जाएगी। सो दैट विल मेक दिस। ये रेड कलर क्यों नहीं नजर आ रहा यार? इसका कलर कम क्यों है? आप लोगों को रेड नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे? नो सर। क्या नजर आ रहा है? डिजिटल काउंटर किस कलर में लिखा हुआ है? अब आपने बोला तो सर हल्का सा पिंक मतलब आ रहा है नजर, वरना वाइट ही लग रहा था। अच्छा, चलें, सही है, ठीक है। राइट, सो दिस इज रिपल काउंटर। इसका जो होता है अपोजिट होगा, वो होगा सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर, वो सिंक्रोनस काउंटर कैसे होगा? वो होगा सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर क्या होगा कि उसमें बस फर्ज करें 2 बिट का अपने सिंक्रोनस काउंटर बनाना है, तो उसके लिए आपको वो स्टेट मशीन बना के ही बनाना पड़ता है, 0 1 1 0 1 1। तो उसके लिए आपको स्टेट मशीन बनानी पड़ती है। उसके आप जो है ना करंट स्टेट लिखते हैं 0 0, नेक्स्ट स्टेट है 0 1, तो ये आपका बन जाता है
तो इसमें देखें कि आप जो है वो अगर इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये क्या चीज है, ये Q0 Q1 का एक्सक्लूसिव आर है। सो D1 इज एक्चुअली इक्वल टू Q0 Q1 एक्सक्लूसिव आर बार बार आ जाता है, और D0 इज बेसिकली Q0 कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 0 0 1 1 0, वो ये Q1 पे डिपेंड ही नहीं करती। सो D0 इज Q1 Q0 कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर इस तरह से मैं सर्किट बनाऊंगा तो ये इस तरह से बन जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप 1, इसकी आउटपुट जाएगी इधर विच इज Q0 कॉम्प्लीमेंट। ये तो वही रहता है, इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरे को हम क्या करेंगे, Q0 Q1 एक्सक्लूसिव आर। अब ये इनकी क्लॉक सेम है, इसकी क्लॉक इसको नहीं जा रही, ये सारे एक ही क्लॉक पे चल रहे हैं और इन सब की आउटपुट इकट्ठी चेंज होगी। इट्स नॉट रिपलिंग, द क्लॉक इज नॉट रिपलिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, देयर इज नो रिपल हेयर। So this will work as it had happen or it turns out to be कि ये जो अगर आप 3 का बनाएंगे तो इसमें भी इसकी आउटपुट और तीसरे की Q डैश Q को आप एक्सक्लूसिव आर करेंगे तो 3 का बन जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव आर करते जाएं तो आपको ये सारे जो है ना वो रिपीट होते जाएंगे। ये वाला आउटपुट और इसकी अपनी आउटपुट को एक्सक्लूसिव आर करके आप तीसरी को दे दें, तो सारे एक्सक्लूसिव आर लगाते जाएं अगली स्टेज में, तो ये इस तरह से बनता जाएगा। अगर मैं इस तरह आपको करके दिखाता हूँ, अगर 3 का आपने बनाना है तो ये 0 0 0 0 Q2 और 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 Q2 Q1 Q0 0 1 1 0 1 0 1 0। Q2 कब 1 होगा, अब यहाँ पे Q2 तो अभी 0 ही रहेगा, और Q2 1 0 0 के बाद आता है 1 0 1, फिर आएगा 1 1 0, फिर आएगा 1 1 1 और फिर आएगा 0 0 0। तो Q2 का क्या फंक्शन निकला है देखें जरा आप। ये तो जाहिर है एक्सक्लूसिव आर चल रहा है इन दोनों का, यहाँ भी एक्सक्लूसिव आ रहा है इन दोनों का, यहाँ भी एक्सक्लूसिव आ रहा है इन दोनों का। तो ये डी Q2 का क्या बन रहा है, Q2 इज यहाँ से अगर आप इसका के मैप बना के देखेंगे और तो ये इन तीनों वैल्यूज के लिए 1 है। सो दिस विल कम आउट टू बी something similar, an exclusive OR gate. So you can carry on this and you can make more and more flip-flops here, but only synchronous case is the clock is going to all of the D flip-flops and there is no one D flip-flop driving another D flip-flop. Right.
So that is a difference between synchronous counter and ripple carry counter. You can complete this exercise and try to make a 4-bit synchronous counter where you have 4 inputs here and 4-bit outputs here, and see if you find some uh, similarity that the circuit is repeating between different stages. So do that assignment. Try to draw assignment as assignment. 4-bit synchronous counter. Synchronous, usually a circuit is synchronous when a clock goes to all the flip-flop and one is not driving another one. Synchronous means synchronous आउटपुट सारी इकट्ठी चेंज होती है, सिंक्रोनाइज चेंज। जिस तरह वो आपने देखा होगा ना, वो जिम्नास्टिक में या परेड्स में वो सारे इकट्ठे हाथ नीचे कर रहे हैं, सारे इकट्ठे इस तरह कर रहे होते हैं, सारे इकट्ठे इस तरह कर रहे होते हैं, सारे इस तरह कर रहे होते हैं। दैट्स अ सिंक्रोनस, क्या कहते हैं इसको, सिंक्रोनस डिस्प्ले। हियर वी हैव अ सिंक्रोनस काउंटर। अब क्या करें? So these are different counter types. 2 counter types we have studied: synchronous and ripple counter. There is a commercial IC also available on a up and down counter. Up down counter, which is for 193. That's it. For 193, 192. All of them are counters. Some of them are BCD counters. Some of them are binary counters. For 193 is, I think, binary counter. So it has a clock and it has a reset, clear input, and it has a Q0 output, Q1 output, Q2 output, Q3 output, a borrow output, and a carry output. It also has an up and down input, up/down. So when it is this control is 1, that means up is activated and it is counts up. When it is this control is 0, down is activated and the output starts to count in down count mode. So basically, it has 4 other inputs. We'll talk about them in the next lecture. I think we can finish it here. Time is already up. Time पूरा हो गया है ना? So it has 4 inputs, the call P0, P1, P2, P3. So what are these inputs? They are very interesting inputs. These inputs are called load inputs. So before clearing, before you clear your circuit, you can load this counter with certain value so that it can start counting from that. So you apply a load input, say here, if you apply 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, then it will, and then you start giving the clock, it will count from 1, 0, 1, 0, it will go to 1, 0, 1, 1, then it will go to 1, 1, 0, 0, and when it will reach 1, 1, 1, it will not start from here again.
it will start from 0, 0, 0. There is no reloading of this. So it will not reload. So we'll make this circuit next time. We see कि ये काम loading कैसे होती है. So auto reload कैसे करना है और load कैसे करना है, या auto reload कैसे करना है कि जब भी ये अपना रन आउट हो जाए काउंट से तो दोबारा 0, 0 से स्टार्ट ना करे, एक प्री डिफाइंड काउंट से स्टार्ट करे. किस तरह से इसको ऑटो रीलोड करना है. जैसे आपकी घड़ी है, अगर इसको डाउन काउंट में घड़ी को लगाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 आएगी. 0 के बाद ये दोबारा 9 से स्टार्ट ना हो, दोबारा 6 से स्टार्ट हो. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So how to make a counter start from certain point, either in the up count mode or in the down count mode, that we'll see in the next lecture. So very interesting. This is something. After this week, you can do plenty of projects on based on counters. Counters are so important and so very much interesting stuff. So we'll send you a list of all the counters that are available in the lab. So you can think about your projects on these counters. And we'll also talk about how to make a clock, proper real-time clock using these counters. So that will be our next lecture, and that is going to be very interesting. How to make a real-time clock. घड़ी कैसे बनानी, जिसको आप सेट भी कर सकें, रीसेट भी कर सकें, उसको स्टॉप वॉच के तौर पे यूज कर सकें, everything like that. So we'll talk about that in the next lecture. Thank you very much. Thank you.